Hello everyone. I hope आप लोग अच्छे हो and I hope you people are practicing problems, learning concepts. This question is of center of mass and collision taken from the book SBT, and one such question we have done. So I will strongly suggest you to pause the video here, read the question, solve it. I'm in 100% sure you will be getting the answer if you have attempted that question. Okay. So now let us start with reading the question. Three particles A, B, and C have masses m, 2m, and m respectively. They lie on a smooth horizontal table connected by light inextensible strings AB and BC. So you can see here AB and BC are what? They are light inextensible strings, and there are three masses connected. This A with mass m, B having mass 2m, and C having mass m. Okay, the strings are taut, that is, they are under tension, and ABC is equal to 120 degree. An impulse is applied to the particle A along BA so that it acquires a velocity u. Find the initial speeds of B and C. So what is getting done here? On A, we are applying some impulse. So we are applying a force for a very small amount of time. Then this thing is happening, because of which, I mean, it will try to move in this direction. But the moment it will try to move in this direction, it will try to take B together with itself. क्योंकि देखो ये दोनों कनेक्टेड है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से, इनके बीच का सेपरेशन डिक्रीज नहीं हो सकता, इंक्रीज नहीं हो सकता. इट मीन्स द मोमेंट ए विल रिसीव impulse and it will have tendency to go forward, it will apply impulse on B also, and it will try to take B together with itself, right? And for that purpose B पे impulse तुम्हारा किधर लगने वाला है, इधर की तरफ. Okay, so let us call it I1. And since A is applying impulse on B, B will also apply the same impulse on A. They are connected, right? So sort of collision sort of thing is happening. So on A, it will apply impulse of value I1 in the opposite direction. Done it? Just like collision. Collision, जब दो चीजें collide करती है, तो what happens? One applies force on another, another one on the first one, in exactly opposite direction, but of same magnitude. So this thing. अब देखो, when B will start moving, it will try to take C with itself also. I mean, this separation is not going to decrease. So C will have tendency to move in this direction. Done है? Because B is moving in this sense. It seems like अगर B इधर की तरफ move करता है, B has a velocity component in this direction. और अगर ऐसा होगा, then B और C के बीच में separation आएगा. So that couldn't happen, right? So B will apply impulse on C. और C पे impulse तुम्हारा किधर लगेगा? In the arrow that I have shown just now. So इस direction में, now let us say this is I2. So B अगर C पे impulse लगा रहा है, तो C भी B पे लगाएगा in the opposite direction I2. ठीक है. So सबसे पहले आप impulse को represent कर लो, कर लिया हमने. इसके बाद now try seeing which body is moving with what velocity. So I'm saying A started moving. Let's say A is moving with velocity V. So B will have a velocity in this direction V, बिकॉज ए और बी के बीच में इस लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो. अब आप देखो, यहाँ पे सी के पास वेलोसिटी किधर हो सकती है? सी के पास impulse is only I2, right? And that is acting along this line CB. So it will have velocity along the line CB, and that, okay, this V is given, okay, uh, so that it acquires a velocity U. So U is given here. So A is moving with the speed U. So B will have velocity in this direction equal to U. डन है. सो बी को अगर आप केयरफुली देखते हो, बी के पास दो इंपल्स लग रहा है, एक I1 लग रहा है और दूसरा क्या है? I2 भी लग रहा है. I2 को अगर आप ब्रेक करोगे ना, चलो पहले बी को डील कर लेते. सो दिस इज 60 डिग्री, राइट? सो I2 विल हैव कंपोनेंट हियर I2 cos 60, and this one in this direction I2 sin 60. So it has two impulses, one acting along the horizontal sense towards A, and another one in the perpendicular direction. So because of this horizontal impulse, I1 minus I2 cos 60, it is having velocity u in this direction. And because of I2 sin 60, it will have velocity in this direction. Done? क्योंकि जिस direction में impulse लगा है उधर velocity होगी. So इस direction में आप velocity v1 ले लो. ठीक है. Now C के पास impulse only is acting along CB. So it will have velocity along CB, and that let us call as v2. ओके. नाउ लेट अस राइट थिंग्स. सो ए के लिए अगर आप लिखते हो इक्वेशन, ए के ऊपर इंपल्स क्या लग रहा है? इस डायरेक्शन में आई लगा था और इधर की तरफ I1 है. सो नेट इंपल्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ आई, बिकॉज आई हैव गिवन इट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ आई. सो आई माइनस I1 इज इक्वल टू, इंपल्स क्या होता है? एफ डी टी क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम. सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू mu.
Okay, now let us talk about b. So b के लिए अगर आप horizontal sense की बात करो, then horizontally it was having initially no momentum, finally it is having momentum m 2mu because 2m is the mass, and net impulse acting towards ba is how much? That is your I1 minus I2 cos 60, that is I2 by 2. Okay, and that is equal to 2mu. Now let us focus on this vertical impulse acting, that is I2 sin 60. So I2 into root 3 by 2 should be equal to how much? It should be equal to 2mv1. ठीक है, अब आप बात कर लो सी की. सी के ऊपर सिर्फ एक इम्पल्स लग रहा है, सो I2 into its, sorry, I2 will be equal to change in momentum. So initially A, B, C all were in rest, right? Now C has a momentum of mv2, so change is mv2 basically. So this is this one. डन है. सो वी हैव गॉट ऑल दिस थिंग्स. अब यहाँ से आप एक काम करो, पहले तो रिलेशन स्टैब्लिश कर लो. क्या क्या रिलेशन मिल सकता है हमें इफ वी लुक एट दिस थिंग. अगर इन दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, then I mean I2 can be written as mv2, right? So mv2 into root 3 by 2 is equal to 2mv1, right? So m cancel हुआ और तुम्हारा root 3v2 is equal to how much? 4v1. So this is what we are getting. ओके, सो वेलोसिटी का रिलेशन मिला. अब देखो यहाँ पे कंस्टेंट आप लिख सकते हो, और कंस्टेंट ये हो सकता है जैसे बी की कितनी वेलोसिटी हमने ली, इस डायरेक्शन में हमने बोला v1, इस डायरेक्शन में u है, ठीक है. और c की स्पीड इधर की तरफ कितनी है, दैट इज योर v2, डन है. और a की स्पीड इधर की तरफ है u. सो यहाँ तो कंस्टेंट ऑलरेडी एग्जिबिटेड है, ये u से जा रहा है, ये u से जा रहा है, इनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी 0 है. सो दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड. बट आप बी और सी के लिए कंस्टेंट लिख सकते हो. जैसे आप सी की स्पीड देखो इस डायरेक्शन में कितनी है, दैट इज v2. सो बी की भी स्पीड इस डायरेक्शन में कितनी होनी चाहिए, v2. सो v2 शुड बी इक्वल टू व्हाट? u का कंपोनेंट आप चेक कर लो इधर की तरफ कितना होगा. सो दिस एंगल इज 60, दिस इज आल्सो 60, राइट? सो दैट इज u cos 60, u cos 60. और v1 का इधर की तरफ कंपोनेंट ये 30 है तुम्हारा. So that is your v1 cos 30. So net velocity of b in this direction is equal to how much? Minus v1. How much it is? Cos 30, right? So this is cos 30. अब देखो यहाँ से आप निकाल सकते हो v2 equal to u cos 60, that is u by 2 minus v1 into root 3 by 2. Now we simply need to put the values, right? So हमें क्या मिला था? root 3 v2 is equal to 4. That was your okay, let me check. Root 3 v2 is equal to 4 v1. Okay, so this is what we have got. Now v2 की जगह, या फिर आप पहले v2 निकाल लो. v2 इक्वल टू क्या होगा? u by 2 माइनस v1 की जगह आप क्या लिख सकते हो? रूट 3 by 4, that is your v2, right? This into root 3 by 2. So this will become how much? v2 को कॉमन ले लो, 1 plus this is 3 by 8, right? So this is equal to u by 2. So this will become v2 into 11 by 8 is equal to u by 2. So this is this. I mean v2 is equal to how much? That is 4u by 11. Now let us calculate the velocity of b. ओके, सो बी का स्पीड देखो, बी का इधर तो स्पीड u है और इधर की तरफ स्पीड क्या है, v1. अब आप v1 को क्या लिखोगे? सो हमें पता है दैट रूट थ्री क्या था, रूट थ्री वी टू इज इक्वल टू 4v1. सो रूट थ्री वी टू इज इक्वल टू 4v1. और रूट थ्री वी टू कितना है तुम्हारा? 4b by 11, राइट? This is what we got, 4u by 11, yes. So this is 4u by 11 is equal to 4v1. So 4 will get cancelled, and v1 is equal to how much? Root 3u by 11. So we have got velocity of b in two directions. One is u and another is your root 3u by 11. दोनों 90 डिग्री पे, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो. So this will become how much? This is going to be root 3 by 11. Okay, root 3 u, I mean इसका स्क्वायर कर लो आप. So 3u square by 121 plus u का स्क्वायर रूट अंडर, डन है. So this is going to give you how much? 124 u का स्क्वायर by 121 रूट अंडर. So that is going to give you 11 u into 124 को आप क्या लिखोगे? So that can be written as this. Okay, so
2 root 31. So this is 2 root 31 and u divided by 11. So this is going to be your answer, right? So this is what we have got. I hope this question is clear. I mean, by now it should be clear with how to go with such sort of systems. Okay. So I hope it is sorted. But in case you're having any doubt anyway, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.